Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. My dear viewers, listeners, and students, I say welcome and assalamu alaikum in the series of my lectures. This series is about the law of contract. Please open your books before starting the today's lecture. This is the lecture number 27 of the law of the contract, and section number 54 says effect of default as to that promise which should be first performed in contract consisting of reciprocal promises. When a contract consists of reciprocal promises such that one of them cannot be performed or that its performance cannot be claimed till the other has been performed and the promisor of the promise last mentioned fails to perform it, such promisor cannot claim the performance of the reciprocal promises and must make compensation to the party to the contract for any loss which such party may sustain by the non-performance of the contract. मतलब जिसने जहाँ पर मुतकाबिला किस्म के मुआहदे हों तो जब तक पहला शख्स अपने हिस्से का वादा अदा नहीं करेगा वो दूसरे को वादे की अदायगी के लिए मजबूर नहीं कर सकता। इसके ऊपर एक मिसाल देखते हैं। A hires B's ship to take in the convey from Karachi to Mauritius a cargo to be provided by A. B receiving a certain freight for its conveyance. A does not provide any cargo for the ship. A cannot claim the performance of the B's promise and must make compensation to B for the loss which B sustained by the non-performance of the contract. इसका मतलब ये हुआ कि जब एक शख्स अपने हिस्से का वादा पूरा नहीं करेगा तो दूसरा उसको अपने हिस्से के वादे के लिए मजबूर नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पर एक ए माल देने वाला था और बी एक शिप वाला था। बी ने एक मखसूस किराया मुकर्रर किया माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का, लेकिन ए ने माल नहीं दिया और बी का नुकसान हो गया। 55. Effect to failure to perform a fixed time in contract in which time is essential. When a party to a contract promises to do a certain thing at or before a specific time or certain thing or at before specified time and fails to do any such thing at or before the specified time, the contract or so much of it as has not been performed becomes voidable at the option of the promisee if the intention of the parties was that the time should be the essence of the contract. उन मुआहदात में जहाँ पर वक्त ज़रूरी हो, बर वक्त तामील न कर सकने का असर जब मुआहदे में वक्त ज़रूरी हो। जब भी कोई फ़रीक किसी मुकर्ररा वक्त पर या इससे क़बल अफ़ाल मुकर्ररा न सर अंजाम देगा तो ऐसे मुआहदात उस शख्स की मर्ज़ी पर ख़त्म किए जा सकते हैं जिसके लिए वक्त एसेंस था। पैराग्राफ 2. इफेक्ट ऑफ सच फेलियर व्हेन टाइम इज़ नॉट एसेंशियल. पिछले में टाइम ज़रूरी था, इसमें टाइम ज़रूरी नहीं है. इफ़ इट वॉज नॉट द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज दैट टाइम should be of the essence of the contract does not become voidable by the failure to do such thing at or before the specified time, but the promisee is entitled to the compensation from the promisor for any loss occasioned to him by such failure. तो आपने देखा कि जहाँ पर टाइम एसेंस था वहाँ पर तो प्रोमिसी के पास ये इख्तियार था कि अगर वो चाहे तो पूरे का पूरे कॉन्ट्रैक्ट को ही ख़त्म कर दे, लेकिन जहाँ पर टाइम एसेंस नहीं होता तो प्रोमिसी सिर्फ़ और सिर्फ कंपनसेशन का हकदार होता है, कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं कर सकता। ऐसी नाकामी जबकि असर वक्त ज़रूरी ना हो। अगर फ़रीक़ैन मुआहदा की नीयत में मुआहदा में वक्त ज़रूरी ना था तो फिर मुकर्ररा वक्त पर या इससे कबल मुआहदे की तामील होना मुआहदा कबल इंफिसाख ना होगा, मतलब इस मुआहदे को ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगर टाइम इम्पॉर्टेंट है तो फिर मुआहदे को प्रोमिसी ख़त्म कर सकता है, अगर टाइम इम्पॉर्टेंट नहीं है तो फिर प्रोमिसी के पास ये इख्तियार नहीं है कि मुआहदे को ख़त्म कर सके, अलबत्ता कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। Paragraph 3. Effect of the acceptance of performance at time other than that agreed upon. A promisee किसी ऐसे वक्त पर acceptance of promise कर रहा है जो वक्त मुकर्ररा नहीं है उसके अलावा. If in the case of the contract voidable on the account of the promisor's failure to perform this promise at the time agreed, the promisee accepts performance of such
promise at any time other than that agreed, the promisee cannot claim compensation for any loss occasioned by the non-performance of the promise at the time agreed, unless at the time of the promise at the time of unless at the time of such acceptance he gives notice to the promisor of his intention to do so. जिस मुआहदे में टाइम ज़रूरी था उसको मुकर्ररा वक्त पर अदा नहीं किया गया, और जिस वक्त अदा किया गया प्रोमिसी ने उसी वक्त उसको एक्सेप्ट कर लिया, और प्रोमिसर को इस किस्म की कोई इत्तला भी नहीं दी कि जनाब आपने ये वक्त के अलावा परफॉर्मेंस की है, लिहाजा इस पे मैं आपसे कोई कंपनसेशन क्लेम करूँगा या कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करूँगा। तो जब प्रोमिसी ने ऐसा कुछ कहा नहीं और ख़ामोशी से ही कॉन्ट्रैक्ट को टाइम के अलावा एक्सेप्ट कर लिया जहाँ पर टाइम एसेंस था, तो फिर ऐसी सूरत में प्रोमिसी बाद में किसी किस्म की कोई लिटिगेशन अदालत में नहीं ला सकता। मुतफ़िक़ा मुकर्रर करदा वक्त के अलावा किसी दूसरे वक्त पर तामील करना। उम्मीद करता हूँ कि इन 2 सेक्शंस की आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी साथी की कोई कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो साथी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके चैनल को लेक्चर को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।